देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। Hello and welcome back to Cricket TV, all things cricket and more. After weeks of incredible cricket, we have arrived at the biggest stage of them all, the Women's T20 World Cup final. In Not India, but sorry, England and Australia has defined Women's World Cup over a decade. One team is looking to reclaim the trophy in front of the home crowd, and well, one is the defending champion. They already have a title and they want another one now. Tonight, we'll look at how both the teams look. We have Nikhil Morsawala and Narayan Pasari with us. Welcome to the show, sir. Thank you. Okay, then before we dive into tactics, let's appreciate what this final represents. Both of the teams are really well. They deserve to be here. Maybe England were in a bit of a jiffy against South Africa when they were reduced for 23 for 3. But of course, they came back, they fought back, and how? Narayan sir, how do you think England's performance has been throughout this season? So, England has been on the top in Group B. They have been unbeaten throughout, actually. And the inaugural edition was won by them at Oval in 2009. And now they are going for a second shot at the same ground, correct? As you mentioned, that semi-final, they recovered from 23 to 3. And their captain, Brunt, returning from injury, led the fight back. And they won by 40 runs. And, this is their fifth T20 World Cup final also. So if you see their, process throughout the group and league matches, so Sri Lanka, they won by 87 runs, Ireland by 4 wickets, West Indies by 38 runs, against Scotland by 38 runs, New Zealand by 9 wickets, and the semi-final, South Africa for 40 runs, Their leading scorer is Hodge. She has been doing excellent work, and she is the highest run getter in the tournament and the highest for any edition of World Cup final. So she is one of the front leaders. So if you see, England wins were more varied in style, big totals defended against Lanka, Indies, and Scotland, and 2 successful chases, Ireland and New Zealand, and of course the semi-final. So they are looking to be a good team, have a good mix of players. So I think on a particular day they can beat any team, but otherwise it would be difficult for them to defeat Australia. Yeah, it's the fight of equals. Nikhil sir, how do you see? We have discussed on Ned Square Brunt, who really contributed against South Africa in the finals, and I think that's the reason they are into the finals. How do you think England has performed throughout the series? लेकिन देखिए उनका जो ग्रुप था ना काफी वीक ग्रुप था Yeah, that's और true. जो ऑस्ट्रेलिया जिस ग्रुप से आई है वो ग्रुप बहुत मजबूत कंपैरेटिवली मजबूत था। तो इंग्लैंड किसके सामने जीती? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका and आयरलैंड, Netherlands and Ireland, one of the two, Ireland, Scotland, one of the two. So उनके सामने जो कंपटीशन था वो ज्यादा में ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म न्यूजीलैंड and an out of form West Indies. Yeah. So they had to be on top of the group. Had they not been on top of the group and come second, they would not deserve to be in the final. Look at Australia. They came through a trial of fire, actually. They defeated South Africa, they defeated India, 2 of the toughest teams. Pakistan is that, they can suddenly catch fire and put out anything. So they defeated Pakistan. They were undefeated throughout the, and defeated, I think, Bangladesh also. So that, जब आप टफ टीम से खेल के क्वालिफाई होते हो तो आपकी जो एक क्षमता होती है वो एक शार्पन हो जाती है, आप एकदम एक पीक परफॉर्मेंस पे होते हो। इंग्लैंड आई है थोड़ा सा आसानी से जीत के, सभी कहीं भी किसी भी मैच में ऐसा लगा नहीं कि वो हार जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा हुआ था पहली मैच में, साउथ अफ्रीका के सामने, जब उनके बैटर्स ने उनको बेल आउट किया था। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप क्वालिफाई होते हो और जब आसानी से होते हो, तो जब
तभी आपको समझना है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो विल हैव टू बी बेटर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट. Whereas for Australia, they've already performed at the peak, and they're right there. They're all raring to go. They're all consummated with that. My God, like I'm there. And though they had an easy semi-final against West Indies, which is not real competition for them. So I think Australia slight edge because of the way they have qualified. But you can never, and I keep on repeating this. You can never ever underestimate England In in England. England. So England Yes. in England is a different cup of tea. It's a different, and I've said this 17 times. I won't repeat. But England in England is formidable. So I am looking at a very very massive matchup. It's going to be a humdinger. I don't see any team giving an inch to the other. It's going to be a damn good fight, and it's going to be a scrap. I can tell you that it's going to be a massive scrap. Last over, something like that. Yeah. 20th over, one ball to go, 2 runs to make, something like that, and 2 wickets to go, something like that. All right. Talking about Australia's strength, Narayan sir, what makes this Australian side so difficult to beat? Because, they have come together as a team. Like we have seen, one day it's Ashley Gardner, the other day it's the bowlers. They have really worked their way up, and they, like Nikhil sir said, they do have an edge. How do you see Australia? So, if you see Australia, as Nikhil mentioned, if you see their wins, South Africa 65 runs, Bangladesh 9 wickets, Netherlands 98 runs, Pakistan 113 runs, India 6 wickets, and semi-final West Indies 8 wickets. So, अभी उनके अगेंस्ट में खाली एक ही चीज है, वो है लॉ ऑफ एवरेजेस, और कुछ नहीं है उनके अगेंस्ट में. Both of them. वो भी एक नेचुरल लॉ है, तो ये और क्रिकेट में बहुत चलता है, इसलिए. So I agree with Nikhil that Australia topped the group and finished the qualifying stage with most emphatic margins of wins, actually देखा जाए by any team, and convincingly also. So उनका एक टफ अपन गिने तो इंडिया के सामने एक क्वार्टर फाइनल वर्चुअल था जो थोड़ा सा टफ लगा उनको बीच में, लेकिन अदरवाइज नहीं था एक्चुअली. सो 6 titles they have won till now. If you take 10, 12, 14, 18, 20, and 23. So it's not no mean. They have been very consistent in their approach. और जैसे निखिल हमेशा बोलता है ना कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो औरतें टफ है खेलने में बेसिकली. उनका उनका बॉडी फिजिक एवरीथिंग इज टफर देन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वो एक फर्क पड़ता है. इंग्लैंड की खाली एक ही विन हुई है, लेकिन जैसे कहा निखिल ने कि भाई होम क्राउड एंड होम कंडीशंस, हु नोज बेटर देन इंग्लैंड. Yeah. करेक्ट ना? Yes. So, or the way top order, Hodge is in solid form, and Brunt also is on round class. तो ये भी एक तरह से है. तो अगर जैसे वो बोल रहा है कि लास्ट विकेट लास्ट बॉल पे जाएगा या 2 रन या 1 रन रहेगा, ऐसा होना चाहिए, है ना? होना दिस इज चाहिए. अ विश लिस्ट, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी गेम हो सकता है. Yes. है ना? Yeah. सो ये भी है. प्लस इंग्लैंड का एक इशू है कि अर्ली इनिंग्स बैटिंग की फ्रेजिलिटी भी रहती है उनकी, है ना? साउथ अफ्रीका के सामने आपने देखा, है ना? और दूसरा क्या है कि ब्रंट का फिटनेस का भी एक इशू है. सो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आफ्टर एन इंजरी. सो दैट आल्सो हैज टू बी सीन. सो ये है कि दोनों साइड में कैप्टन्स आर डूइंग क्वाइट गुड, और ये अच्छा रहेगा मोटा मोटी. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. Yes, yes. Nikhil sir, how do you see this game being played? Where do you think the game will either be won or lost? Because I think Australia will be eyeing at exposing England's middle order. That's their weak spot. So what do you see? It's actually if you see the difference between the two teams, the difference between Australia and every other team in the tournament is कि इनकी जो बैटिंग डेप्थ है ऑस्ट्रेलिया की, वो 10-11 तक जाती है. यानी अगर ऑस्ट्रेलिया इज एट इवन लेट अस से 55 for 6, यू कैन नॉट अज्यूम दैट वो 100 रन में आउट हो जाएंगे, 180 भी बना सकते हैं. क्योंकि उनकी जो पीछे की जो बैटिंग है 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे बल्लेबाजी कर सकते हैं. यानी उनकी जो डेप्थ है बैटिंग की, वो बहुत ही, यानी आज तक मैंने कोई टीम नहीं देखी है जिसकी इतनी बैटिंग डेप्थ होगी, ना तो मेंस टीम में ना वुमेन्स टीम में.
और ये लोग 11 तक बैट करते हैं ऑनेस्टली। तो आप एवरेज कोई भी देखिए, कोई भी बॉलर का एवरेज उठा के देखिए, बैटिंग एवरेज, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 80 और 90 स्ट्राइक रेट से बनाया है, और उसका एवरेज कुछ 20-30 रन है वगैरह वगैरह। सो यानी तो इंग्लैंड को क्या करना है कि उनके जो गेंदबाज है उनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा कि अगर इंग्लैंड को अगर इस मैच में कोई इम्पैक्ट करना है तो कहाँ से करेंगे, उनके बॉलिंग से करेंगे, उनके गेंदबाज से करेंगे। तो उन 11 बल्लेबाजों को, जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, उनको कैसे नियंत्रित रखें। और मुझे लगता है ये जो की है ना इस मैच का, इज लॉरेन बेल अकॉर्डिंग टू मी, एंड लिंसी लिंसी स्मिथ। दीज आर द टू बॉलर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली खेला है पिछली मैचेस में। उन्होंने अपने 4 ओवर में या तो 20 रन दिए, या 27 रन दिए, 25 रन दिए, 5-6 के एवरेज पे, जो T20 में बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। और 1 विकेट लिए, या 2 विकेट लिए, या 3 विकेट लिए, और सामने वाली टीम के ऊपर पूरे हावी हो गए थे। तो अगर इंग्लैंड को इस मैच में कुछ भी एक मार्क छोड़ना है, तो उनकी जो गेंदबाजी है बॉलिंग। वो एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑन द डॉट हो गया। वरना ये ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है ना, ये इस टीम को तो कहीं, अगर पहले खेल रहे हैं तो 180-200 तो कहीं नहीं रहा, और अगर चेस करें तो कुछ भी चेस कर सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता है। तो मेरे ख्याल से द डिफरेंस इज गोइंग टू बी दी हाउ वेल द स्पेशलिस्ट bowlers of England bowl. I'll come to Australia later, but for England, I think critical, these two specialist bowlers, Lauren Bell, Lindsay Smith, perform the way they performed in the earlier matches. Very critical. Yep. Narayan, so how do you think England, like Nikhil sir said, कि इन दोनों में इंग्लैंड का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा आज के दिन? Will Sophie Eccleston will be a star performer for England, or will it be somebody else altogether? See, I still feel बॉलिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की, है ना। दे हैव अ हेज, हॉज हु इज ए टूर्नामेंट्स लीडिंग रन स्कोरर टुडे, 294 रन बनाए उन्होंने, है ना। एंड द मोस्ट रन स्कोर्ड इन अ सिंगल एडिशन, एक वो है। और उनके कैप्टन है ब्रंट, शी इज एन ऑलराउंडर, and she's been doing good both with the bat and the ball. And of course, Heather Knight, their batsman. अभी वो सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छा ब्रंट के साथ में अच्छा चेज किया। तो अभी इसमें ऐसा ही होगा, टॉस जीतेगा जो टीम पहले बैटिंग करेगा, 180 मारेगा, और दूसरे वाले को चांस देगा। तो 180 मारने के लिए बैटिंग की जरूरत है, फिर स्टार्टिंग में बॉलिंग की जरूरत नहीं है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है बेसिक देखा जाए। और वैसे ही इफ यू टेक द ऑस्ट्रेलियन साइड, अगर उनको बैटिंग पहले आती है तो, सो दे हैव ए मुनी, बेथ मुनी, हु गिव्स अ 50 ऑन डिमांड। एक्चुअली वैसा है, जब भी टीम चाहती है वो 50 दे देती है बना के एक्चुअली। देन गार्डनर, एन ऑलराउंडर, बैट विद द बॉल एंड एक्सीलेंट। सो एंड ऑफ कोर्स पेरी। अभी पेरी का थोड़ा सा डाउट है, व्हाट आई हैव रेड इन द पेपर्स इज शी इज डाउटफुल फॉर द फाइनल बिकॉज शी इज नॉट फुल्ली फिट देखा जाए। Yes. अदरवाइज क्या है ये, मतलब आई स्टिल फील इट विल बी अ मैच, अ फाइनल वेयर द बैटर्स विल हैव हावी होंगे बॉलर्स के ऊपर, ऐसा लग रहा Okay. है। All right. Nikhil sir, any players, any matchups that you're looking forward to today, or मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, इसमें जो नॉर्मल प्लेयर्स है वो तो खेलेंगे अच्छा, लेकिन जिस प्लेयर को मेरे ख्याल से संडे को परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी होती है, और अगर वो टॉप 3-4 को जल्दी से आउट कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज को, तो जॉर्जिया वेरहम जो है, इनमें क्षमता है स्कोर एक्सेलरेट करने की in the okay? second part of the innings. And she has one of the highest strike rates in the Australian team. It's about 140 plus. So at a 140 plus strike rate, even the men's team, you see people like Sudhir Kumar Yadav having that type of a strike rate. So when you have that type of a strike rate, you have the ability to change the game. And I think what you need, therefore, in Sunday's match is a game changer. Your regular players will play. पेरी विल प्ले, बेथ मुनी विल प्ले, वो सब ठीक है। यहाँ पे लॉरेन बेल भी फाइट देगी और लिंसी स्मिथ भी फाइट देगी, दोनों के मैचअप होगा, कोई आउट होगा, कोई आउट नहीं होगा। लेकिन जो चेंज करेगा गेम, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है देखना। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से
ये गेम चेंजर होगी जॉर्जिया वेनम मेरे हिसाब से। और जैसे नारायण ने हॉज के बारे में बात की इंग्लैंड के, शी कुड बी द गेम चेंजर फॉर इंग्लैंड if she stays, if because she comes in the opening, I think top three. I think she opens comes at number three, one of the two. And if she remains and retains her wicket for England, she could be the game changer because she can really accelerate the score later. And I think that was she's proved earlier also. So between these two teams, I think if I was to choose who the game changer could be, Georgia Vanham for Australia and Virat Hodge for England. Right. I would like to play a quick rapid fire with you before we go on to what happens at toss and how the pitch looks like, if you allow me. Sure. Right. Good. We'll start with Nikhil sir. Nikhil sir, one player who must deliver if England are to win. Lauren Bell. Lauren Bell. Narayan sir, which phase will decide the finals today, tomorrow? See, Sunday. there are three phases: power play, the middle, and the death overs. So I feel the middle overs is where the tournament's key battle lies. Actually, if you take the case of Australia, Perry Gardner, Axis, repeatedly rescues and dominates the middle overs. They steered Australia also from 68 for 3 to victory against India. And on the ball side, while bowling, you have Ash Gardner, Sophie, and George Wareham also. They squeeze the phase actually. So that will be very difficult. अगर उन्होंने वो जो 17 से 16 वाला अगर फेज में उन्होंने अगर टाइट कर दिया ना, तो इंग्लैंड की हालत खराब हो जाएगी. इंग्लैंड के केस में लेंगे तो सोफी एलेक्सन, as you mentioned, she's got 37 wickets across all T20 World Cup innings actually. Yes, so yes. she controls the middle over with her spin, and along with Brunt, the captain, and Knight, 94 stand उन्होंने मारा 23. So ये एक middle game का मेरे को लग रहा है. So whichever team wins, the spin versus spin or partnership building battle, between the 7 to the 16 over is likely to take up to the finish and would give a good advantage to that team. All right. Nikhil sir, who is Australia's biggest match winner in the finals? I think he's the captain. I think she has shown her ability to, as a bowler, she's a bowling Yeah. all-rounder. And I think as a bowler, जब वो आती है और ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है, उनके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स बहुत कम है, ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है और बैटर्स बहुत ज्यादा, बैटिंग डेप्थ ज्यादा है. इंग्लैंड में 2-3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं जो बैट नहीं कर सकते लेकिन अच्छी तरह से बॉल कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में स्पेशलिस्ट बॉलर्स ना के बराबर है, लेकिन जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उसमें आई वुड काउंट मोलिन्यू, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एज probably the person to watch out for, who can, as Narayan said, if the middle overs have to be controlled, and if Nat Skipper Brunt is going, bashing the bowlers, and if Virat Hodge is an element, who will come and control? I think it's going to be Molineux because she's left-arm orthodox, and left-arm orthodox spinners are very, very difficult to play even they're in the element. And if the pitch supports a left-arm orthodox bowler, very difficult to read a left-arm orthodox bowler. So I think she can make a big difference for Australia in this match, as though she's an all-rounder, as a bowler. And as a captain, of course, I'm not even a captaincy, but as a bowler, I think she can make a very, very big difference. All right. Narayan sir, what do you think? Which individual player battle are you most excited to watch? So I think on both sides are the captains, according to me. Yes. So you have definitely. a Brunt this side and a Gardner on the other side. Both bat in the middle and they bowl useful overs, according to me. And both have a difference makers in the respective semi-finals. हमने दोनों में देखा actually कैसा. So I feel एक तो कैप्टनशिप का लीड भी है, and their respective performance both will be helpful to the respective teams. Yes. All right. One question for both of you. You have to pick one. Don't pick the same one, please. Who's the player of the match? Nikhil sir. Litchfield. Australia is going to Litchfield. win, and Litchfield is going to be the highest scorer. Okay. Narayan sir. Ash Gardner. Ash Gardner. Okay. Both of us Narayan choose Australians, so both of us expect Australia to win. I know that's what my next question was. What are your percentage today? ऐसा है ना
इंग्लिश लोगों ने इंडिया पे बहुत राज किया है, मैं तो इंग्लैंड को जीतने देने वाला नहीं हूँ। but England is more Indianized than Australia. That's true. You get your chicken tikkas there only. Yeah. All right. But Okay. then she asked you the percentage. Don't avoid the question. 51-49. Yes, yes. Nine. No, 65-35 Australia. Oh, wow. You are stepping out of your comfort zone today. You're stepping out of your comfort zone. Your Yeah. comfort zone is 51-49. No, I give you a caveat. मैं caveat भी देना चाहता हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया पे पैसा नहीं लगाया है। But it could be a day of surprises. And as we all three said, England in England, the crowd support, knowing the conditions and the law of averages, Anything who can knows? happen. But then the law of averages, वो तो दोनों के ऊपर Dono. ही घूम रहा है, Yes, you're because right. whoever wins will win through and through from the first game to the last game. And that adds pressure, because Australia is favorite, England is, they're playing at home ground. Fans से pressure build होता है, निखिल sir? Yeah, of course, hota hai, because the expectations are there, right? And when you're playing in front of your home crowd, it's not just the motivation part; it's also the pressure part. Where if Yeah. you don't perform, you know that you're going to be booed, and you don't want to look bad in front of your home crowd. I mean, if you're in Yeah. another country, you can actually forget about it, go to a bar, drink, go to sleep. At your home, you can't do that. So I think that pressure is going to be there, and that's going to be more on and the expectation. Or see, Australia's already won. It's a champion, right? It's already proven itself. England, I don't know when they was the last time they won the championship. I don't have the 2009 statistic. inaugural. 2009. You know what? Inaugural. So it's been 17 years since they won, and now they're in the finals. So I think this is your chance. Do it now. And if you don't do it now, you may not never get a chance again, is what's going to be bothering them. I think that pressure is going to show, but they are all seasoned players, right? None of them are कच्चे कोई भी कोई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है. सब सब बहुत जिंदगी देख चुके हैं, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं. वो प्रेशर वो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनमें क्षमता है. इसलिए बट मैच बड़ी ही तगड़ी होगी इस वजह से. Right. नारायण सर, if पिच की बात करें तो पिच क्या रोल प्ले करेगा, वेदर हाउ इट विल बी, और तो whose favor एक्चुअली it will go to? हाँ, अगर आप वेदर का जो फोरकास्ट है लंदन का ऑन संडे, it is a mix of cloud and sunshine with a warm high around 26 डिग्रीज ऐसा बोल रहे हैं. बट क्या होता है जुलाई महीने में, अर्ली जुलाई के अंदर लंदन के अंदर बारिश का भी अच्छा रिस्क रहता है उधर ओवर देयर. सो आई थिंक आज अपन फ्राइडे पे है, वी डोंट नो संडे तक क्या होगा. वी शुड कीप दैट वॉच आउट. All And right. as far as the pitch is concerned, we have discussed this earlier. Lords is a balanced surface. देखा जाए ना, fast bowlers usually get early swing and seam movement, and then later on spinners find when the cloud cover हो जाता है वैसे. और प्लस क्या, ये मैच आधा आधा खेला जाएगा, आधा दिन में आधा रात में खेला जाएगा. ये पूरी रात का मैच नहीं है एक्चुअली, सो वो भी है. एंड आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, should be favored since the pitch tends to be a bit slowing down and the ball moves more as the match progresses actually. So making chasing very hard है. तो ये भी हो सकता है, ड्यू का भी फैक्टर होगा. तो आई थिंक टॉस वुड आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. तो जो टॉस जीतेगा और बैटिंग करेगा मोस्टली. दिस इज व्हाट आई फील. And if it rains, that DLS comes into play, then for the team batting second, the goalpost keeps on moving. So that's always a bit difficult to then plan your strategy. So I think I agree that batting first makes sense, or it Lords if you win the toss. But you Alright. know that some captains are known to do the opposite thing just to upset the balance of the other team, saying ye kyun kiya. So let's see. So Let's if you see. want to summarize, it would be actually Australia's ruthless efficiency versus England's resilience under pressure. Kya Yes. baat hai? Yes. Absolutely. Definitely. Agreed. I think This that's will about be this sums will up be the headline that's on Sunday morning. that sums up everything. I agree with That you sums up completely. everything. Nikhil sir, just one last question. What will the scoreboard look like? I think it's not going to be a low scoring match. It's going to be somewhere. So I would say I would give a range about 170 to 200. Okay. That range should be there because both the teams have a decent bowling attack. So it's not that
आके कोई भी कितने भी रन बना सकते बट क्षमता भी है बल्लेबाजों में। तो मुझे लगता है ये 170 से 200 के बीच में विथ वन राइडर, इफ दी climate is such that it's completely overcast and in raining in between, wet spell, dry spell, wet spell, dry spell, it could be a low scoring match. Otherwise, if it is a standard weather, बीच में एक आध बारिश गिर गया ठीक है, but otherwise it's a standard weather, then 170 to 200 is the range that I'm saying. For the viewers, just one more thing. We do miss IPL T20, and I think that's why Nikhil sir has T20's background. That I'm trying to hide from when I'm trying to hide Smriti. So I'm seeing that Mandana should not be shown, so I'm just putting my head like that. All right. Any closing thoughts, Narayan sir? नो इट शुड, मतलब हम तो क्रिकेट के प्रेमी हैं हम लोग, है ना, बेसिकली चाहे वर्ल्ड में कहीं भी खेला जाए, वुमेन हो मैन हो, मैच 20 वाला 20 मैच 20 ओवर का मैच तक खेला, यस। इट शुड नॉट बी वन साइडेड हो, 20 ओवर का हो, एक ने मार दिया 220, दूसरा फिर 120 140 में रखड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इस एडिशन में आप देखोगे ना तो छक्के कम लगे हैं कंपेयर टू दी अदर एडिशन, दिस आई वाज टोल्ड। तो छक्के भी लगने चाहिए, चौके भी लगने, और जैसे 20 ओवर है, हर एक ओवर में एक चौका एक छक्का लगे ना, तो आपको 120 रन तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं, 100 के 80 और 100 के बीच में। सो एंड शुड बी एक्सीलेंट गुड क्रिकेट, बारिश का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वी शुड बी एंजॉयिंग इट, ऐसा नहीं हो कि आई शिफ्ट टू विंबलडन, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फीफा All right, then we are looking forward to packed Lords, which Nikhil sir says is a great experience, and maybe we should all experience once. Yes. One You must, trophy in fact, awaits. all those cricket lovers who are watching this, if you want to know what cricket, how it is actually watched, forget how it is played, how it is actually watched, and what is the attitude and the cricket etiquette that is followed in the stadium, you have to go to Lords. Yes. No, So that's the goal. I think it is, this match will start at 9 PM IST, ना 3:30 का टाइम दिया है उधर, वहाँ का लोकल टाइम का। सो I think so, yeah. it should be 9 o'clock. जैसे वो कल वो सेमीफाइनल इतना लेट था ना, 11:30 बजे, Yes. I did not see that match actually. Yeah. 9 से अपन देख सकते हैं। देख सकते हैं। Yeah. All right, then Australia is favorite on this panel, but of course, like Narayan sir said, if England can repeat the resilience, we never know what happens. We wish you fantastic finals and edge of the seat finals. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. All the best. आओ देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है।